Assalamu alaikum. Good evening to one and all. Today in this video we'll be starting with the cellular organization. The components or the substances which resides in the cytoplasm are known as cell organelles. So today we are going to start with the cell organelles. Before starting, let me remind you about the previous class in which we have discussed about the plasma membrane. So what is the definition of plasma membrane? Understanding. And we have also seen what are the characteristics of the plasma membrane, functions of plasma membrane. So today in this video we'll be starting with the cellular organization. Okay, so mainly cell is divided into three parts: plasma membrane, cytoplasm, and nucleus. Plasma membrane is the outer covering of the cell. Cytoplasm is mainly the middle, or we can say, which differentiates the plasma membrane and nucleus itself. And inside the cytoplasm there is cytosol. So cytoplasm is nothing but it is a thick gel semi-transparent fluid in which the cellular compartments or the cellular components are residing. So between the cellular components or between the cell organelles there is one fluid is there, so that is known as cytosol. Cytosol mainly constitutes about 70% of total cell, which mainly includes cytoskeleton, microfilaments, understanding, and some other proteins. And you must know that this cytosol it is also having its own proteins, understanding. Okay, so in the cell organelles we are going to start with the membrane bound cell organelles. The cell organelles which are mainly covered with the membranes, that are known as membrane bound cell organelles. Okay, whether they are having the double membrane or single membrane. Mainly we have to talk about the mitochondria today, and following by the other cellular components. Okay, so today let's see about the mitochondria. First of all, we must know that the discovery of mitochondria. Before seeing the discovery, we must know what is the literal meaning of the mitochondria. So mito का मतलब होता है thread, धागा, और chondria का मतलब होता है granule. It means a threaded granule structure which is present inside the cell. It was first seen by the Kolliker, physiologist whose name was Kolliker, in 1850. And this cell is known as the powerhouse of cell because it generates the energy in the cell in order to prepare it, in order to develop mainly the functioning, in order to promote the functioning, well functioning of the cell inside the cell. Okay, which helps in the formation of this one, we can say DNA synthesis, mRNA, RNA synthesis, understanding. And also it mainly gives the provides energy by use or by we can say metabolism of the proteins, or we can say it will be having consuming the proteins. The proteins, they will be storing the energy, and after that they will be releasing the energy through the mitochondrial membrane into the cell so that the cell can function properly. Okay, the next one is what is about length. The length of the plasma membrane, mitochondria, is about 5 to 12 micron meter, and the diameter is about 0.5 to 1 micron meter. Okay, and this mitochondria is a self-replicating cell organelle. What is self-replicating? It is the ability of the structure which has its own ability to replicate or to form the copies of its own self. यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, अगर जो सेल के अंदर होता है, ठीक है ना, ये इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये खुद ही दूसरा स्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है. दूसरा स्ट्रक्चर मीन्स इसलिए यानी माइटोकॉन्ड्रिया, अंडरस्टैंडिंग. एंड नेक्स्ट वन इज इट इज डबल मेम्ब्रेन. डबल मेम्ब्रेन होता है जो मेनली जिसके अंदर मेनली होता है फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स. जैसे मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताया था फॉस्फोलिपिड्स, अंडरस्टैंड. जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनके ऊपर होता है वो स्ट्रक्चर होता है, उनके दो पार्ट होता है. एक होता है हेड, ठीक है ना, जो हाइड्रोफिलिक होता है, और दूसरा होता है टेल जो हाइड्रोफिलिक फोबिक होता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इट इज अ ग्लोबुलर इन शेप. ये ग्लोबुलर शेप होता है, ठीक है ना, जैसे ग्लोब्यूल्स होते हैं तो उन्हीं तरीके का उसका शेप होता है. एंड इट, एज आई हैव टोल्ड यू, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द मेम्ब्रेन, अंडरस्टैंडिंग. ठीक है ना. तो प्रोटीन्स which will be mainly stored inside the plasma, this one, the mitochondria, inside the mitochondria, and the mitochondria will use the protein in order to provide the organ, this one, do the oxidation reactions or redox reactions so that it can provide the energy to the
this one entire cell. Okay, now next one is the composition. यानी जो डीएनए ये होता है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन कौन सा कंपोजिशन क्या क्या होता है इसके अंदर, समझ आ रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, द कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट डीएनए, फर्स्ट वन इज द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज देयर, and we can also say this structure you have seen, this one is the mainly ATP synthase. Okay, ATP means adenosine triphosphate molecule synthase. Okay, formation. So next one is the we can say next this one inner membrane is there, and also we can say outer membrane is also there. ठीक है ना? And CRISTAE is also there. This one understanding. ठीक है ना? And next one is the ribosomes. That's the mitochondrial ribosomes. These are the composition and we can say components. Understanding? And here you can see components. Outer membrane is this one. Outer membrane, then inner membrane, encapsulated. Understanding? ठीक है ना? जो convoluted होता है. ठीक है ना? आप लोग देख सकते हो. This is the convoluted internal membrane of the this and the mitochondria. And next one is the intermediate space. Intermediate space means the space which is between this space. Okay, the space between the internal membrane and the outer membrane is known as intermediate space. Okay, so next one is the CRISTAE. What is the CRISTAE? CRISTAE is the infoldings of the inner membrane. यानी यो जो होता है ना ये वाला CRISTAE, यानी ये वाला like this structure. So this one is infoldings. These one are the infoldings. So these infoldings are known infoldings. यानी ये infoldings होता है, ठीक है ना? इनको हम बोलते हैं यानी convoluted structure. It is known as CRISTAE. Last is the matrix. Matrix is a space which is enclosed by the inner membrane. जो ये inner membrane होता है ना ये वाला, this one inner membrane. So ये जो space होता है इसको हम बोलते हैं matrix. Understanding? इसी matrix के अंदर inside this matrix only the DNA is there. This one what we can say granule is there. This is granule. Two granules are there. Understanding? ATP synthesis is there. ठीक है ना? Proteins are there. And CRISTAE is there. ठीक है ना? Understanding? And so this mainly is about the components of the mitochondria. Okay, so let me elaborate about the this one outer membrane, then matrix, and also inner membrane. Understanding? So outer membrane mainly we can say outer membrane is mainly made of it is mainly contains the phospholipid bilayer. Understanding? समझ आ रहा है? So there is the presence of the phosphate groups, there is presence of the proteins. Understanding? Okay, so this mainly there is also presence of the integral protein. What are the integral proteins? The protein is which are permanently staying there, ठीक है ना, on surface of this membrane. यानी integral proteins वो होते हैं जो permanently वहां पे होता है, ठीक है ना? वो movable नहीं होता बल्कि वही fixed होता है, वो अपना काम करता है. ठीक है? Understanding? उनका synthesis बाद में होता है. ठीक है? तो वो मैं बताऊंगा. ठीक है? तो नेक्स्ट वन इज so this outer membrane it mainly allows the passage of the 500 dalton molecules. जो 500 dalton molecules है ना उनका passage mainly help करता है कि 500 dalton molecules जो क्या होता है, जो पास होता है, एंटर होता है या पास होता है, इन एंड आउट होता है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. ठीक है ना? यानी उसका काम फंक्शन करने के लिए. ठीक है? सो नेक्स्ट वन इज this one. It also contains some enzymes for the biological oxidation. Understanding? Oxidation first आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें हम बोलते हैं कि loss of electrons. Understanding? In order to gain the energy, in order to release the energy of this particular so the energy will be released from this mainly this mitochondria. Understanding? Now next one is the inner membrane and matrix. This inner membrane is mainly encapsulated. Okay, you can say CRISTAE are there. Okay, so one inconvoluted this membranes are there. ठीक है ना? So this is inconvoluted encapsulated membrane. ठीक है ना? Which mainly this one consists of this one enzymes, ATP synthase, DNA, ठीक है ना, proteins, ribosomes, and all that things. ठीक है ना? You can say also the granules. ठीक है ना? Which mainly helps in this one we can say synthesis and formation of the ATP molecule, adenosine triphosphate molecule, because we need 38 ATP molecules. Understanding? Mainly in order to ठीक है ना, so that our body can work normally. ठीक है ना? Because this cell they need the energy so that they can perform the functioning properly. DNA formation, DNA synthesis. ठीक है ना? Understanding? These all the functions which will be done by which will be helped by the mitochondria. Okay, so it mainly contains the enzymes, we can say ATP synthase. So this ATP synthase and the enzymes they will be concerned with the synthesis. ठीक है ना? जो enzymes होते हैं और ATP synthase जो होता है यहाँ पे ATP synthase, ठीक है ना, एक complex structure होता है जो क्या करता है, mainly ये help करता है synthesis यानी बनने में. जो बनता है ना ATP adenosine triphosphate molecule, जो energy जो बनती है, energy जो release होती है ना, so वो mainly
किसके थ्रू बनती है, एंजाइम्स और एटीपी सिंथेस के थ्रू, ठीक है। एंड एंजाइम इज आल्सो, दे आर आल्सो कंसिडर्ड विद द साइट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है ना। तो साइट्रिक एसिड साइकिल अगर हम मेनली कहेंगे साइट्रिक एसिड साइकिल एंड रेस्पिरेटरी चेन ऑक्सीडेशन, तो साइट्रिक एसिड साइकिल का मतलब ये होता है कि जो एटीपी सिंथेस होता है और जो प्रोटीन्स होता है, ठीक है ना, ये प्रोटीन्स क्या होता है, प्रोटीन्स क्या होता है, ये कंज्यूम करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दिस माइटोकॉन्ड्रिया, दिस एटीपी सिंथेस, इट इज गोइंग टू कंज्यूम द प्रोटीन्स so that it can release the energy, it can release enough energy for the cell to maintain its stability, to maintain its functions, understanding, either functioning of the other cell organisms, understanding. And next one is the oxidative phosphorylation, and the ATP synthesis also occurs inside this, what we can say, in the membrane, understanding. What is oxidative phosphorylation? Means that when there is a loss of electrons, we can say in addition to the oxygen is being lost, and there is the formation of the phosphate groups. Yeah, we can say phosphate groups, which mainly help us in the synthesis and formation of the ATP molecules, so that your mitochondria is going to release, or it is going to release the energy, so which is very much important for the cell to maintain its integrity, to maintain its homeostasis or balance, or we can say equilibrium. And last one is the integral, that I already told you that this mitochondria, it contains mainly the proteins, ठीक है ना, mainly the proteins, and these are known as the intrinsic proteins or integral proteins. These intrinsic or integral proteins, they stay permanently on the surface of the membrane, and they will be entering, and by the help of the ATP synthesis enzymes, these proteins will be this one consumed, and then in order to release the ATP molecules, understanding, for the cell, in order to this one promote the normal functioning regulation of the hormones by the cell, understanding. So this is all about the mitochondria, okay. Now let's talk about the functions of the mitochondria. As I have already told you that mitochondria is mainly known as the powerhouse of cell, yeah, energy source of cell, okay, understanding. So yeah, it is also called as energy currency of cell, okay, because it stores energy and it also releases energy in the form of ATP molecules, that is mainly synthesized by the enzymes and ATPase molecules, ठीक है ना, so that they can this one change this energy into the mechanical energy, understanding, by the process of oxidative phosphorylation and also cellular respiration, understanding. So what is the cellular respiration? When the oxygen is being taken received by the cells, there is the this one consumption, or we can say there is the consumption of the oxygen. So then when the oxygen is being lost, oxygen is being removed, so there is the formation of the high bond energy molecule, that is known as ATP molecule, okay. So it is mainly the power generation or powers of house of cell. It maintains a proper concentration, ठीक है ना. It is also helping in the maintaining the concentration of the calcium. जो कैल्शियम होता है ना सेल के अंदर, ठीक है ना, उसको भी मेंटेन करता है, ठीक है ना. कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम लेवल्स या कैल्शियम आयन्स होता है जो Ca2 पॉजिटिव होता है, कैटायंस, सो उनको मेनली रेगुलेट करता है और उनको मेनली दिस वन मेंटेन करता है, उनका बैलेंस सेल के अंदर, ठीक है, ताकि जो सेल होती है वो वहां पे अच्छे से ट्रांसफर हो सकता है मॉलिक्यूल्स. देयर इज अ ट्रांसफरेंस ऑफ द ATP molecules from this one mitochondria to the other cellular compartments, understanding. And it is also, we can say that the third function of it is energy transduction through the respiration, that I already told you. When the oxidative phosphorylation occurs, so means there is the it harnesses द रिडक्शन, यानी जो ऑक्सीजन होता है वो रिमूव होता है सेल के थ्रू, सेल के अंदर जब वो रिमूव मीन्स की जब वो कंज्यूम होता है, ठीक है, या वी कैन से रिडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन. सो जब वो कंज्यूम होता है, कंज्यूम होने के बाद वहां से एनर्जी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, ओके. नेक्स्ट में थर्मोजेनेसिस, यानी इट आल्सो जो रहता है ना ये हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, इसलिए हम उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल या एनर्जी हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये सेल के अंदर हीट प्रोड्यूस करता है, जिस हीट के अंदर या जिस एनर्जी के अंदर जो सेल के अंदर जो कंपार्टमेंट होता है वो अच्छे से काम करता है, सेल अच्छे से ग्रोथ करता है और डेवलप होता है, ठीक है. देन नेक्स्ट वन सेल डेथ एंड सेल ग्रोथ. ये जब सेल होती है, ठीक है ना, अगर सेल जो डेथ होती है, ठीक है ना, उसको मेनली सेल डेथ रिपेयर होने में मदद करता है, ठीक है ना. जो नए सेल्स होती हैं उसको हेल्प करने में मदद करता है. मैंने पहले ही बोला जो ये
दिस वन माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर, यानी जब ये क्या करता है, ये दूसरे जो माइटोकॉन्ड्रिया अपने ही सेम जैसे सेल, अपने ही सेम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, ठीक है, इसमें ये एबिलिटी होती है, नेचुरल एबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये और मेंटेन भी करता है ये सेल डेथ और सेल ग्रोथ, यानी अगर सेल डेथ होती है, सेल डाई, सेल मर जाती है, ठीक है ना, उसके बाद नया सेल बनने में हेल्प करता है, रिपेयर एंड रिजनरेशन ऑफ द न्यू सेल्स, अंडरस्टैंडिंग। एंड लास्ट वन इज द रेगुलेशन ऑफ द इम्यूनिटी, अंडरस्टैंडिंग। यानी रेगुलेशन ऑफ इम्यूनिटी मतलब ये होता है जो इम्यून, जब भी यहाँ पे जब सेल अच्छे से काम करेगा, ठीक है ना, जब एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जब सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होगा, तो सेल के अंदर, सेल के बाद वो पूरे टिश्यू में, तो टिश्यू के अंदर पूरे ऑर्गन सिस्टम्स में, तो फिर जो इम्यून सेल्स होते हैं, ठीक है ना, या इम्यून सिस्टम होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होता है, ठीक है ना, उनके अंदर मेनली जो ये क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है ना, ताकि वो अच्छे से काम कर सके, ताकि वो अच्छे से, यानी जो बैक्टीरिया होता है या पैथोजन होता है ना, तो वो सेल के अंदर न जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो सेल के अंदर जाता है तो वो सेल को डैमेज कर सकता है, और हमारा इम्यूनिटी है ना, वो कम हो सकता है, ठीक है ना, यानी हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना बहुत वीक हो सकता है, वो अच्छे से लड़ नहीं सकता है इन्फेक्शंस के साथ, ठीक है। तो इसीलिए जब भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो एनर्जी की वजह से क्या होता है, जो इम्यून सेल्स होती है, ठीक है ना, जो इम्यून सिस्टम होता है मेनली, उसमें भी एक तरीका जो रेजिस्टेंस, सॉरी, जो उसका वो रिएक्शंस होता है, या अंदर उसकी जो कैपेबिलिटीज होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से काम करता है और पूरी बॉडी को इन्फेक्शन से या डिजीज से बचाता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके।